बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस पेपर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे MDCAT 2022 का बायोलॉजी का पोर्शन। इसमें हम बेस्ट आंसर पर और इसकी एक्सप्लेनेशन पर फोकस करेंगे। मोर लेक्चर्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं बायोलॉजी लर्निंग जोन एंड MDCAT MCQs और बायोलॉजी के MCQs के लिए भी आप बायोलॉजी लर्निंग जोन को विज़िट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू? A virus that infect bacteria, a bacterium that infect virus which behaves as bacteria, combination of bacterium and viron। तो बैक्टीरियोफेज जो लफ्ज़ है ये बैक्टीरिया एंड फेज मीन ईट, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। What of the following virus contains single stranded DNA? तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनमें से पायरो वायरस के पास होता है। पॉक्स वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, एडिनो भी डबल स्टैंडर्ड है और हर्पस वायरस भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो पायरो वायरस इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। हाउ मेनी टेल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द एंड प्लेट ऑफ द बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज की जो एंड प्लेट होती है उसमें 6 टेल फाइबर्स होते हैं। The enzyme integrase, protease and reverse transcriptase are found in which virus? तो ये जो एंजाइम्स हैं ये HIV वायरस की खूबसूरती हैं और की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसको हम HIV वायरस कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन? जब यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी तो इसके एंड पे हमारे पास इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब अगर बैक्टीरिया होता तो फिर लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्योंकि यहाँ पे यीस्ट है तो यीस्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ईच कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फर्स्ट डैश एंड देन डैश। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो भी कैरियर होता है पहले वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा और देन ऑक्सीडाइज्ड होगा। जिस तरह NADH की एग्जांपल ले लें, NADH पहले रिड्यूस होता है फिर ऑक्सीडाइज होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन्स, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन से प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल? क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का कलर होता है येलोइश ग्रीन। अपॉन इनिशियल हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड, तो जब स्टार्च को हम ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो माल्टोज होता है। तो माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 10 इज, ह्यूमन बोन सेल्स कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर? तो बोन में 20% वाटर होता है। यूनिक 3-डायमेंशनल शेप ऑफ द फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड कंस्टिट्यूट्स, जो 3-डायमेंशनल शेप होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है या उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास 3-डायमेंशनल शेप में टर्शियरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। ब्यूटारिक एसिड इज विच कार्बन फैटी एसिड? तो ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन फैटी एसिड। तो ब्यूटेन से निकला तो ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन फैटी एसिड। विच आर द फॉलोइंग इज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जो 2 मैक्रोमॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। तो इनमें से ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ विच प्रोसेस? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में ब्रेकडाउन होती है वाटर की मौजूदगी में, जबकि इसका जो रिवर्स है वो कंडेंसेशन है, जिसमें वाटर रिलीज होता है, मोनोमर से पॉलीमर बनता है, और हाइड्रोलिसिस में पॉलीमर से मोनोमर बनते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का जो रिवर्स है वो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन का रिवर्स क्या है? हाइड्रोलिसिस है। प्रोटीन्स आर द मेन डैश ऑफ द सेल। तो प्रोटीन, अब इसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स भी ठीक हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी ठीक है, लेकिन अब जो इसमें बेस्ट आंसर आएगा, चूंकि ज़्यादातर जो प्रोटीन्स है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को करती हैं, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में भी करेक्ट आंसर। द सेल वॉल में बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनमें से कौन सा है जिसमें सेल वॉल नहीं होगी? प्लांट में भी सेल वॉल होती है, एल्गी में भी होती है, एल्गी में होती है, फंजाई में भी होती है, फंजाई आर्की में भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, उसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम मीजोसोम कहते हैं। Which of the following are single membranous organelle?
तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन है? गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंगल मेम्ब्रेनस है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी दरकार होती है। द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफेगोसोम आर आल्सो नोन एज, इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन भी हो सकता है इसमें ऑप्शन। Which one is common in both prokaryotes and eukaryotic cell? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कॉमन है, हालांकि उनका साइज डिफरेंट है, लेकिन दोनों सेल में ये होता है। देयर इज नो क्लियर डिफरेंस बिटवीन द डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स इन सेंसरी न्यूरॉन एक्सेप्ट टर्मिनल पोर्शंस। The neurotransmitter active outside the CNS central nervous system is acetylcholine, a hormone that plays a major role in social bonding, childbirth, milk injection and sexual reproduction is, तो इसके लिए जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा से जो हार्मोन आएगा वो प्रोजेस्टेरोन आएगा। The middle layer of the meninges is arachnoid matter, the part of the brain which guides smooth and accurate motion and maintains body position is, तो इसके लिए cerebellum is the best answer. Vascular system or ambulacral system is a unique and complex system, especially present in the echinoderms. Roundworms belong to which phylum? Roundworms belong to the nematodes. Silverfish is an insect. Yes. टिश्यू आर नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग एनिमल, तो स्पॉन्जीज में टिश्यू फाउंड नहीं होते। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ ए मेटाबॉलिक रिएक्शन ड्यू टू changing condition within the active site. Competitive inhibitors compete with the substrate. Non-competitive inhibitors molecules have a quite different structures from the substrate molecule. Zinc ion is attached at the active site of the enzyme carboxypeptidase. The zinc ion function as an activator. What is the best physiological pH for optimal functioning for most of the cellular enzymes of human? Human के लिए जो best pH है वो 6 to 8 है. Adaptation that an organism acquired by its own action during its lifespan without modifying its genome are non-heritable. For evolutionary process to occur, which of the following is not a geographical barrier? Atmosphere is not a geographical barrier. According to the biogenetic law of Ernest Haeckel, ontogeny recapitulates phylogeny. The animal species on Galapagos resemble species living on the South American mainland. Digested food from the intestine is carried to the liver by hepatic portal vein. Which proteins are produced by white blood cells in response to rash and provide immunity? So antibody proteins are produced by the white blood cells in response to the antigen. The lymphatic vessels of the body empty the lymph into the bloodstream at the subclavian vein. Flow of the blood in the capillaries is adjusted by precapillary sphincters. The pressure exerted by a solution separated by a semi-permeable membrane from pure water is osmotic pressure. Which of the following is not a consequence of anaerobic expression in human muscle cells? High consumption of energy. Respiratory surface of the following have the following characteristics. It must be permeable. Which of the following is a prokaryote? E. coli is a prokaryote, Escherichia coli. Number of the layers present in the gram-negative bacterium in cell wall. तो ग्राम नेगेटिव में 2 layers होती हैं, outer membrane और the peptidoglycan. The division of the cocci in 3 planes forms Sarcina, which is a cube of how much cocci? तो Sarcina 8 cocci का cube होता है. Which of the following statement is correct? तो इनमें से option number A is correct. Tuberculosis and pneumonia are caused by gram-positive bacteria, Mycobacterium tuberculosis or Streptococcus pneumonia. Nitrifying bacteria are the example of chemosynthetic bacteria. Each human testes have 200 to 300 lobules.
Which cell in the human males are responsible for the release of testosterone? तो टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से रिलीज होते हैं, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं. Fertilized ovum is implanted and undergoes further development in the uterus. Level of luteinizing hormone is maximum in blood during which stage of menstrual cycle? Ovulation stage. Major sources of transmission of syphilis: sexual contact. What is false about the cartilage? There are many blood vessels in the cartilage. ये नहीं है क्योंकि cartilage में blood vessels नहीं होती. Which of the following is a muscle component that acts as a store for energy? So creatine phosphate can store the energy in the muscles. Which of the following is not found in skeletal muscle fibers in humans? Large amount of hemoglobin. Hinge joint is present between which of the following bones? So humerus and the radio ulna. Question number 63 is the test cross is made to check the genotype of a trait. Which of the following crosses is a test cross? तो टेस्ट क्रॉस में हमेशा एक अननोन को हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं. When what happens when a Rh negative woman married with an Rh positive man conceived a child who is Rh positive? So it is the maternal fetal incompatibility. DNA stores biological information in discrete units termed as the genes. The study sex linkage in Drosophila. To study sex linkage in Drosophila, Morgan mated wide-eyed males with a wide-eyed red-eyed female. What will be the phenotype of offspring? To all red-eyed males and females. Which one of the following is X-linked dominant disorder? Hypophosphatic rickets is the X-linked dominant disorder. Mode of inheritance in humans can be traced through the pedigree analysis. Thank you so much. This is all about the Mdcat 2022 paper. For more lectures and MCQs, you can visit Biology Learning Zone.